Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is BA Part 1st, Paper 2nd, Representative Indian Political Thinkers. Name of the paper is Representative Indian Political Thinkers, and we have been covering so many topics or so many chapters or so many thinkers and their political ideas or political views about different things or different aspects we have covered. And for today's video, our topic is Jawaharlal Nehru peaceful coexistence. So let's start. Pandit Jawaharlal Nehru was the chief spokesman of Afro-Asian Unity, Non-Alignment Movement and World Peace, as we all know. And in 1927, he had protested against the use of Indian troops by the British against India, and he was against fascist and Nazi powers, and he had visited Republican Spain and China to express India's sympathy with their freedom fighters. So here, when we say that Jawaharlal Nehru was the chief supporter of peaceful coexistence, or he supported this principle for the mankind, and so here when we see in 1927, he protested the use of Indian troops by the British against India, as the Britishers at that time used to they used Indian troops so many times, and along with this, Pandit Jawaharlal Nehru was against fascist and Nazi powers, two prominent powers of his times, and Nazi powers we can see as Hitler, and fascist as represented by Mussolini, and Pandit Jawaharlal Nehru was so daring, and he had so sympathy, or he believed strongly in peaceful coexistence, that he didn't care for the superpowers and of that time, like whatever at that time the superpowers were there, and in this for this he visited Republican Spain and China to express India's sympathy with their freedom fighters. So he supported the freedom fighters of some countries like Republican Spain and China, and he opposed the rulers of these countries and their atrocities. And along with this, and moreover, he had been an internationalist. So it is quite clear when we say that Pandit Jawaharlal Nehru was a supporter of peaceful coexistence. So he can be defined as a nationalist, as well as nationalist as well as internationalist, and he was aware of the dangers of narrow and chauvinistic nationalism. So there is a difference between nationalism and chauvinistic nationalism, and he never supported chauvinist nationalism, as there can be we can see these aspects of internationalism in his views, in his political views, and he thought that there must be some kind of fusion between the concepts of nationalism and internationalism. As I have told you earlier, that he supported nationalism as well as internationalism, but he supported nationalism to that extent that he doesn't it doesn't work as a barrier in his views of internationalism, and he talked of international character of industrialism. The world has become internationalized, production is international, markets are international, and transport is international, and man's ideas continue to be governed by a dogma which has no real meaning today. No nation is really independent, they are all interdependent. I have I have quoted Pandit Jawaharlal Nehru as
he supported the present scenario, the contemporary scenario of that time, and so he said that the world has become internationalized, and no nation or no one can live if he does not support peaceful coexistence. And thus, if the emotional loyalties has made him a national, the rational pragmatic considerations for human welfare made him a believer in peaceful coexistence and the ideas of one world, as described and said by Professor V.P. Verma. पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो राजनीतिक विचार हैं उनके अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बारे में, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जिसे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि हम लोग अलग अलग विचारधाराओं के होते हुए भी, अलग अलग विचारधाराओं को मानते हुए भी हम सब लोग विश्व के सभी लोग बिल्कुल शांति से एक साथ रह सकते हैं। उनके विचारों में हम लोग देखते हैं, पंडित नेहरू के विचारों में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अफ्रो एशियन यूनिटी, अफ्रीका एशिया एकता की उन्होंने बात की है, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की, उसके साथ ही उन्होंने विश्व शांति की भी बात की है। यहाँ तक कि उन्होंने जो रिपब्लिकन स्पेन और चाइना के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए वहाँ के व्यक्ति थे, जो कि वहाँ के शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उनको उन्होंने सपोर्ट किया है। और इसके साथ ही जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में हमें राष्ट्रीयतावाद दिखाई देता है, वहीं हम ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देयर कैन बी सीन अ बैलेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म इन हिज थॉट्स। उनके विचार में हमें राष्ट्रीयतावाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बीच में एक हमें संतुलन दिखाई देता है। He was the main supporter of nationalism. Nevertheless, he supported internationalism, and उन्होंने राष्ट्रीयतावाद को सपोर्ट किया है, उन्होंने इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीयतावाद को सपोर्ट किया है। इसका अर्थ है कि अपने देश के प्रति प्रेम होते हुए भी हम जो दुनिया के दूसरे देश हैं या दुनिया के जो लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीयतावाद है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना है कि विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल है। और आज की हमारी ये सिचुएशन है कि हम दूसरों से अलग रहकर नहीं जी सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, और जो कि हमें उनके विचारों में दिखाई देता है, और उनके हमें विचार ही दिखाई देते हैं, जो कि प्रोफेसर वीपी वर्मा के शब्दों में अगर हम कहा जाए तो दैट इंडिकेट्स लाइक वन वर्ल्ड, एक विश्व की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।